India is no country for women. The law bends before politicians. Justice in this system is a privilege reserved for the powerful and the rich. You have heard these lines before. They're often dismissed as exaggerations, as cynical slogans, as baseless outrage. But pause for a moment and ask yourself, are they really false? Or are they an accurate reflection of the reality like that we live in? Because how else does one explain the bail and suspension of sentence granted to Kuldeep Singh Sengar in the Unnao gang rape case? And in case you forgot what that case was about, let's jog your memory. June 4th, 2017, a 17-year-old girl walks into the home of a sitting BJP MLA. She isn't there for politics, she's not there for favor, she's just looking for a job that could help her struggling family survive. What awaited her instead was brutality. She was raped by a man drunk on power. And if you think that was the end of the suffering, think again. Because days later, the survivor was abducted, drugged, and gang raped for days by 3 men. First, a powerful neta destroys her dignity, then the system allows her to be violated again and again. But the humiliation did not stop there. When the survivor and her parents gathered courage and filed an FIR in August, naming Kuldeep Sengar, the police simply refused to act. The BJP MLA's name was conveniently missing and scrubbed clean from that charge sheet. Nearly a year later, in Feb, the minor survivor refused to back down. She approached the court demanding that a man who raped her be named, booked, and punished. And what followed next was not justice, it was revenge. Her father was beaten up by Sengar's men, booked on a false case, and then found dead in police custody. Only when the survivor broke and, sort of broke down, she was desperate, tried to set herself on fire outside the chief minister's residence, did the system finally stir. In April of 2017, amid national outrage and blatant allegations of police shielding a powerful MLA, the probe was handed over to the CBI. Kuldeep Sengar was arrested. But only for a brief moment. It felt like justice might finally prevail. But even that illusion was short-lived. In July of 2019, days after the survivor wrote to the Supreme Court, the Chief Justice of India describing the threat she faced, her car was rammed in a chilling accident. 2 of her aunts were killed. That was the breaking point. The Supreme Court stepped in, pulled the case out of Uttar Pradesh and transferred it to Delhi. In December of 2019, Sengar was convicted, sentenced to life imprisonment. Justice at last? It seemed at least. But 6 years later, after unimaginable pain, personal loss of family, courage, what does a survivor get? The Delhi High Court suspended Sengar's sentence and granted him bail, as if her suffering meant nothing. And when the survivor dares to protest this decision at India Gate, let's show you what happened there. She's dragged away, manhandled, silenced by the police. Her crime? Refusing to accept a verdict that once again tramples upon her dignity. This, remember, is not just one case. This is an indictment of a system that protects power and punishes survivors. But we are giving this platform to the survivors. Listen in for the next couple of minutes on what she has to say. What does she want now after years of battle, fighting for justice, fighting for her dignity, fighting for her own life and that of her family? जो ऑर्डर आया है अभी, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पे यही कहना, मैं कल कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट गई थी, जजमेंट जैसे मैंने सुना, मैंने विरोध करने की कोशिश किया। जज साहब खड़े ही जजमेंट सुनाए हैं, वो बैठे भी नहीं हैं और जजमेंट सुना के चले गए। मुझे इस जजमेंट से बहुत दुख, मुझे बहुत आहत हुई कि मैं सुसाइड कर लूं। बट मैंने अपने बच्चों को सोचा और परिवार को सोचा कि मर के तो इंसाफ नहीं मिलने वाला है। अगर भगवान ने जीवित रखा है इंसाफ के लिए तो संघर्ष करेंगे, न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे रेप के आरोपी को अगर बेल दे दी जाती, जमानत मिल जाती, तो और कैसे हम सुरक्षित रहेंगे?
मेरे पास बस उनके वकील ये बोलेंगे कि सुरक्षा का हवाला देते हैं कि सीआरपीएफ की सुरक्षा, सीआरपीएफ की सुरक्षा। भाई पहले बात तो मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई उन्नाव से, लखनऊ से, कहीं से भी खारिज हुई है, मैं ये सुनने में आया। उसके बाद में परिवार की पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटाई गई। उसके बाद में बहस हुई, मैं बहस में बराबर जाती रही। बहस में इंग्लिश टू इंग्लिश बहस हुई है। अगर देश में यही चीज़ लागू हो जाए, जो हिंदी में बहस हो, तो जो गरीब महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो सुन के अपना कुछ तो सवाल कर सकते हैं कोर्ट में, जज साहब से पूछ सकते हैं जज साहब ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन हमारे साथ में वही हुआ, आज ये हुआ है, कल का मेरे बच्चों के साथ होगा, मेरी बेटी के साथ होगा, मेरे बेटे के साथ अगर कोई मार दिया मेरे बेटे को, मेरी बच्ची के साथ हुआ, तो मैं तो माँ हूँ, माँ ने तो झेल लिया जो झेलना था, लेकिन बेटी कैसे झेलेगी, बेटे के परिवार कैसे झेलेगा। ये हुआ। उसके बाद में सर मुझे न्याय नहीं मिला। मुझे पूरा भरोसा है, आंख बंद करके भरोसा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। और एक सीबीआई के अहम गवाह हैं वीरेंद्र यादव, वो भी न्यूज़ से हैं। कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ जेल से उनके ऊपर सुरक्षा का मैटर लगा था, उनके पास भी सुरक्षा थी, उनकी सुरक्षा हटा दी जाती है। और उसके दूसरे दिन बाद गैंगस्टर और ये सब केस लगा के वो उस बंदे को 50 दिन उन्नाव जेल में रखा गया। उसे करंट लगाया गया हीटर में। मुझसे बताए वो कि आप मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है बहन। हमने कहा कि ठीक है, मैं आगे जाऊंगी आपके लिए, क्योंकि आपने मेरे पापा के केस में गवाही दिया है। जो लोग नहीं दिए हैं वो आपने सीबीआई और कोर्ट को दिया है। उसके बाद में उनको 50 दिन जेल में रखते हैं, उनको मारते हैं, उसके बाद में फिर छोड़ते हैं। और कुलदीप सिंह सेंगर इशारा किए हैं जेल से, उनका वकील अवधेश सिंह खिलाफ पार्टी के, उन्होंने किया है सब कुछ। और ऐसे परिवार में कोई नहीं, परिवार में मेरा भाई है, कोई नहीं रह गया। मेरे चाचा ने क्या किया, मेरे चाचा ने ना किसी बेटी को छेड़ा, ना तो किसी बेटी के साथ रेप किया, ना तो किसी बेटी के साथ कुछ किया, ना तो किसी बहन बेटी को आंख उठा के देखा। लेकिन उस इंसान ने क्या गुनाह किया कि उसको 7 साल हो गए जेल में, बाहर नहीं निकल पाया। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर पावरफुल है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का ही नेता।